किसानों को बूस्ट तो देंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स की पहुंच। नहीं, इसमें दोनों चीजें इस समझौते के अंदर, जैसा कि आपने देखा कि हमने डेयरी और एग्रीकल्चर से संबंधित जो सेंसिटिव प्रोडक्ट थे उनको हमने दूर रखा है। और अब मुझे लगता है कि दुनिया के सभी देशों को हमारे नेगोशिएशन से समझ में आ गया कि ये सेंसिटिव हमारे लिए कितने सेंसिटिव है ये सेक्टर्स, और इसलिए इनको समझौते से दूर रखा गया। किसी 20 देशों में समझौता हमारा नहीं हो रहा है, अटका हुआ है, तो ये सेक्टर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब सरकार का ध्यान ये रहेगा कि अभी हमने इनको प्रोटेक्ट किया है, बट एक मीडियम टर्म में या लॉन्ग टर्म में हमको इनको अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कॉम्पिटिटिव बनाना होगा, जिससे हमारी प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस दुनिया में रह सके, क्वालिटी कॉम्पिटिटिवनेस रह सके, और उसके ऊपर उससे संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, और कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग के अंदर भी इसमें ध्यान देना होगा। तो ये मुझे लगता है कि ऐसी कोई ना कोई बजट के अंदर घोषणा होने की उम्मीद है। और आप डेयरी में आप देखिए कि भारत आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा विश्व का मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री हो गया है। 139 मिलियन मेट्रिक टन मिल्क पर ईयर, और उतना यूरोपियन यूनियन से दुगने से भी ज्यादा हम देश दूध का उत्पादन करते हैं। हमारी खपत भी दुनिया में सबसे ज्यादा है, और खपत आने वाले टाइम में बढ़ने वाली भी हमारी सबसे ज्यादा है। तो उस पोटेंशियल को देखते हुए प्रोसेसिंग डेयरी में है हमारी, वो विश्व स्तर की प्रोसेसिंग है डेयरी में, लेकिन एग्रीकल्चर के दूसरे प्रोडक्ट्स में जिसमें वेस्टेज है, वेस्टेज कंट्रोल है, उसकी प्रोसेसिंग फार्म के ऊपर है और फार्म टू पोर्ट है, उस पूरी प्रोसेसिंग के अंदर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट विल लुक एट द एंटायर सप्लाई चेन एंड प्रोवाइड सर्टेन इंसेंटिव। मुझे लगता नहीं है कि छोटे मोटे इंसेंटिव होंगे। मोस्ट इंसेंटिव आई फील इन द बजट आर लाइकली टू बी समथिंग रिलेटेड टू एंटायर सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल। दक्षिणा जी, यहाँ आम आदमी क्या सोचता है? आम आदमी बजट से ये सोचता है कि क्या उसको लोन ज्यादा तो नहीं देना पड़ेगा, सेविंग्स उसकी कैसे होगी, ईएमआई ज्यादा तो नहीं भरनी पड़ेगी। तो अगर बैंकिंग के लिहाज से बात की जाए इस अलग अलग फैक्टर्स को लेके, तो क्या उम्मीद की जा सकती है? कुछ तो सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट डाउन हो रहा है और आम आदमी स्मॉल सेविंग्स की तरफ अपना रुझान दिखाता है। इस साल भी जो आंकड़े अभी आए हैं इस हफ्ते, उसमें दिखाया गया है कि आम आदमी स्मॉल सेविंग्स की तरफ आकर्षित है। तो वहां पर अगर आप देखा जाए तो पीपीएफ वगैरह के रेट एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेड रेट है, फिक्स डिपॉजिट के रेट आपके कम होते जा रहे हैं और उस पर एक टैक्स का भी एलिमेंट है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जो पार्ट बी होगा फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच का, जो वित्त मंत्री का स्पीच होती है उसके दो भाग होते हैं जी। तो जो आपका टैक्स वाला पोर्शन है, सभी लोग उम्मीद करेंगे उसमें कुछ ना कुछ रियायत दी जाए, और नहीं तो सीनियर सिटीजन के लिए आ जाए, क्योंकि ये जो टैक्स 30% का है ये सभी को कष्टदायक होता है। और हम आम आदमी देखा जाए वैसे भी उतार चढ़ाव चल रहा है। दक्षिणा जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन एक विशेष जानकारी हमें अपने दर्शकों तक देने की, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आपसे कुछ ही देर में बजट पेश करने वाली है। निखिल बिल्कुल, और कैबिनेट बैठक में बजट को मंजूरी मिल चुकी है, ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मोदी सरकार का 3.0 का जो तीसरा बजट है उसको मंजूरी कैबिनेट की बैठक में मिल चुकी है। वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति से इसकी अनुमति ले ली थी। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जहां प्रेसिडेंट ने उनको दही चीनी खिलाकर बजट की दही चीनी खिलाई थी, उनको शुभकामनाएं दी थी, और वित्त मंत्री ने उनको बजट की कॉपी सौंपी थी। तो ये सारी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, यानी कि काउंटडाउन का जो समय है लगातार कम होता जा रहा है। लगभग 10 मिनट 11 मिनट का समय अब रह गया है 11 बजने में, और उसके साथ ही साथ देश के तमाम लोग, कहूँ कि दुनिया भर में जहां भी भारतीय हैं या जो दूसरे लोग हैं, उन सब की जो निगाहें हैं वो भारत के इस बजट पर, जहां पर 140 करोड़ भारतीयों को इस बजट की उम्मीदें हैं। और जिस तरह से हम अभी प्रोफेसर जोशी के साथ चर्चा कर रहे थे कि दरअसल जब भारतीय इकोनॉमी लगातार खुल रही है और हमारे पास दुनिया भर के मार्केट आ रहे हैं, ऐसे में दुनिया भर की निगाहें इस बजट पर जरूर होगी। लेकिन यहाँ के लिए छोटे के लिए जल्द हाजिर होंगे। भारत के सहकार की नई पहचान एनसीसीएफ, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, देश भर के किसानों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। ई समयोगी पोर्टल किसानों को एमएसपी पर गारंटी
और पारदर्शी खरीद का भरोसा देता है। इस डिजिटल मंच से 42 लाख से अधिक किसान जुड़ चुके हैं, जहां बायबैक अग्रीमेंट मॉडल के तहत सीधी खरीद, गुणवत्ता जांच और समय पर डिजिटल भुगतान होता है। एनसीसीएफ अरहर, उड़द और मसूर की 100% एमएसपी पर खरीद कर किसानों की मजबूत ढाल बना है। आज ही ई संयुक्ति पर पंजीकरण करें। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अपना बिजनेस फंडिंग अप्रूवल, ग्रोथ गारंटी, यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नया बूस्ट, empower your ideas and grow with युवा शक्ति। युवा अभिनंदन के साथ स्मार्ट स्विच, साइन, बेटर इंटरेस्ट रेट और फ्लेक्सिबल पेमेंट। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रिलायबल पार्टनर, युवा कॉन्ट्रैक्टर्स टीम देगा वर्किंग कैपिटल और प्रोजेक्ट सपोर्ट दोनों एक साथ। मेरी पसंद मेरी पसंद मेरी पसंद मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे एचपी। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया। पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भारत के सरकार की नई पहचान एनसीसीएफ, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, देश भर के किसानों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। ई संयुक्ति पोर्टल किसानों को एमएसपी पर गारंटी ग्रिड और पारदर्शी खरीद का भरोसा देता है। इस डिजिटल मंच एमएसएमई जो इंसेंटिव स्कीम्स हैं एमएसएमई को, उन तक वो पैसा, उनका पेमेंट्स कैसे टाइमली हो, पेमेंट्स नहीं मिलते हैं। क्योंकि एप्रिल में यूरोप के साथ हुआ, उस पर भी ये सवाल मैंने वाणिज्य मंत्री से पूछा कि ये कहा जाए कि जो एमएसएमई सेक्टर है कहीं वो सा झेलना पड़ जाए। एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम देते हैं हमारे बहुत जरूरी है। उसको के बजट में मुझे आप ये कहते हैं तो आपकी दिल की ख्वाहिश बन के रह जाएगी या वाकई जोर होता है आशुतोष? देखिए, मेरा तो साफ तौर मानना है जो काफी दूर करेगी और कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन तीन फंडामेंटल है जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो तीन फंडामेंटल्स हैं जो वाकई में दुनिया को डिफाइन कर रहा है। वो है एक रेयर अर्थ मेटल, हम क्या कर रहे हैं, दूसरा एआई को लेकर क्या कर रहे हैं, तीसरा ग्रीन एनर्जी में क्या कर रहे हैं। अमेरिका क्यों चाइना के साथ, क्योंकि उनकी जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है एनवीडिया, उसने अमेरिका को फोर्स कर दिया कि चाइना में जाकर हमको इजाजत दीजिए, क्योंकि चाइना जो एआई की चिप बना रहा है वो हमको चाहिए। हमारे लेवल 2016 में की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाला दिन है। रिफॉर्म एक्ट निकलेगी बजट से, उस में से अपना नवा बजट पेश करेगी। बिल्कुल, और कैबिनेट ने इस बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पीएम की अध्यक्षता में बजट को मंजूरी मिल गई है। थोड़ी देर में दिल्ली पर खड़ी है निर्मला सीतारमण, लगातार नवा बजट पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण, जब हम कहते हैं कि भारत विमेन लेड डेवलपमेंट के पाथ पर एक्सप्रेस वे पर दौड़ रहा है, तो ये भी एक नजीर है निर्मला सीतारमण का। नई बार ये बजट पेश करता से रिफॉर्म को लगातार गति मिलने की बात कही जा रही है। 130 करोड़ भारतीयों का ये बजट हुआ और पिछली बार सबका विकास के संकल्प के साथ अर्थव्यवस्था को नई गति दी गई थी, तो इस बार सभी ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये रफ्तार और तेज होगी, क्या सुधारों की गाड़ी और तेज बढ़ेगी। पीएम की अध्यक्षता में बजट को मंजूरी मिल चुकी है। थोड़ी देर में पेश होगा बजट 2026 का। ताकि मुझे क्योंकि सिर्फ 5 मिनट का समय रह गया है। देश की घरेलू मांग जो है वो मजबूत हुई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितता, उथल पुथल के बीच जो बजट आ रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण में भी हम ये प्रेडिक्शन देख चुके हैं। आखिरी 5 बचे हैं, क्या कहेंगे राकेश जी? देखिए, इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार को अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी से इंटीग्रेशन की बात कही जाएगी, और जो सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक्सपोर्ट का एक रोल अत्यंत अहम है, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कस्टम्स के फैसिलिटेशन के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाएगा कि कस्टम के फैसिलिटेशन के अंदर जो कस्टम का प्रोसीजरल
हर्डल्स हैं जिससे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के अंदर हमको सहायता मिल सके और दोनों को प्रोत्साहन मिल सके, ये एक हो गया। दूसरा मुझे लगता है एआई, इंटीग्रेशन ऑफ एआई इनटू मैन्युफैक्चरिंग, एआई से संबंधित कोई ना कोई चीज होगी। एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट इशू होगा जिसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, और एजुकेशन, स्पेशली हायर एजुकेशन एंड मेकिंग इंडियन एजुकेशन कॉम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट, इसके ऊपर मुझे लगता है कि कुछ बजट पे दिया जाएगा। लेकिन एक और ग्रीन इनिशिएटिव्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसके ऊपर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये है कि 85% पेट्रोलियम एनर्जी की रिक्वायरमेंट इंपोर्ट पर निर्भर है, कोयला भी है, और उसको कम करने, और वो टाइम टू टाइम बढ़ रहा है, उसकी मतलब एवरी ईयर 1-2% बढ़ जाता है हमारा इंपोर्ट रिक्वायरमेंट। तो उसके ऊपर मुझे लगता है कि बड़ा एक उसमें एक कुछ ना कुछ आ सकता है, क्योंकि सरकार इसके बारे में सीरियस है। तो ये कुछ एक पहलू है। और दूसरा, एफटीए जितने अभी हुए, आपने देखा कि 3 एफटीए तो हमने 2 महीने में किए हैं, तो इन एफटीए के ऑपरेशनलाइजेशन पे ध्यान दिया जाएगा। तो ऐसे कुछ इंसेंटिव्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर ये जो प्रोडक्शन एंड इंसेंटिव्स के साथ मैन्युफैक्चरिंग था, क्या इसको और आगे बढ़ाया जाएगा, इस तरह की चीजों को? देखिए, उसका अगर आप इवेल्युएशन करते हैं तो उसके अंदर कुछ सेक्टर्स में हमको कामयाबी मिली है, कुछ सेक्टर के अंदर अभी चैलेंजेस बने हुए हैं। तो जैसे मोबाइल के अंदर हमने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने प्रोग्रेस की है, जहाँ के ऊपर हम गए, तो उसको मुझे लगता है उसको रैशनलाइज निश्चित रूप से किया जाएगा। और अब वैसे भी भारत का एक्सपोर्ट आप देख रहे हो कि हमारा प्राइमरी एक्सपोर्ट से वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो पीएलआई के अंदर वो उसकी निश्चित रूप से पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमको फोकस्ड उसमें प्रोडक्शन भी करना है। अच्छा, उसमें 2 चीजें हैं दोनों, एक तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्लस एक्सपोर्ट प्रमोशन दोनों, और पीएलआई के अंदर मैन्युफैक्चरिंग दोनों को ही लेता है। तो उसमें मुझे लगता है बहुत जल्दी से कि टैरिफ को लेकर के, इंटरनेशनल टैरिफ, यूएस टैरिफ, बहुत सारी बातें हुई हैं। क्या आत्मनिर्भरता की को एक और थ्रस्ट मिलेगा इस बजट से? नहीं, आत्मनिर्भरता को निश्चित रूप से खर्च मिलेगा, क्योंकि ये तो अब कहा ही जा रहा है, और ये हम मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजी में भी हम कह रहे हैं कि जो भी चीज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करती है और हम कॉम्पिटिटिवली बना सकते हैं वो ठीक है, लेकिन प्रेजेंट डे वर्ल्ड के अंदर पूरा आइसोलेट होके नहीं रहा जा सकता। बहुत सारी चीजें जिसकी रिक्वायरमेंट हमको विदेश से है, क्रिटिकल मिनरल है, रेयर मिनरल है, टेक्नोलॉजी है, एआई टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजें हमको इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि भारत का बजट आइसोलेशन की तरफ नहीं जाएगा। आत्मनिर्भरता हमेशा से ही हमारा एक सशक्त पहलू रहा है, वो हम निश्चित रूप से करते रहेंगे, और उन प्रोडक्ट में आत्मनिर्भरता जिसके अंदर हम अपने आप बना सकते हैं, उसमें हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो, और जिस प्रोडक्ट में हमारी स्ट्रेंथ है उसको हम एक्सपोर्ट कर सकें। जी। और अब से महज 7 सेकंड का वक्त रह गया है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में अपना बजट पेश करेंगी। सरकार का बही खाता सामने आएगा साल 2026 का, और देश की अर्थव्यवस्था के लिए आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये लगातार नवा बजट होगा। किस तरीके से देश की आर्थिक प्रगति आगे बढ़ेगी, विकास आगे बढ़ेगा, और इस बजट में क्या टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी, किस वर्ग को मिलेगा फायदा, ये सब इस बजट 2026 में, जिसमें आपसे बस 30 सेकंड का समय रह गया। शुरुआत हो सके। सरकार जब बार-बार ये हम कह रहे हैं कि परफॉर्म के जरिए रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, और जब रिफॉर्म्स होंगे तो पूरी तरह से स्थिति ट्रांसफॉर्म हो सकेगी। तो ये है परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का दौर। और बजट जब हम बात करते हैं 2047 तक विकसित भारत बनाने की, आत्मनिर्भरता से लेकर रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का ये जो दौर है, और इसमें सबसे खास बात यह है कि किस तरह से हम अपने राष्ट्र हितों को आगे रखते हैं, और देश का एक एक व्यक्ति इसको पूरा करने में किस तरह से जुटता है। तो जब उसको पूरा करने की बात आती है तो ये बात भी सामने आती है कि उसको क्या कुछ सरकार दे पाती है, किस तरह से इन चीजों को सरकार आगे बढ़ाती है। ये लोकसभा की आइटम नंबर 1, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। आइटम नंबर 1। Sir, with your permission, I rise today on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions,
under Article 281 of the Constitution, report for 2026 to 2031, Volume 1, main report of the 16th Finance Commission. 2. Report for 2026-2031, Volume 2, Annexures of the 16th Finance Commission. Number 3. Explanatory memorandum as to the action taken on the recommendations contained in the above report. आइटम नंबर 2, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। Honorable Speaker, sir, on the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026-2027. Since we assumed office to discipline, sustain growth and moderate inflation, this is the result of conscious choices we have made, even in times heightened uncertainty and disruption. Our government, led by Honorable Prime Minister Modi, has decidedly and consistently chosen action over and pursued far-reaching structural reforms, fiscal prudence and stability, while maintaining strong trust on public energy security and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we ensure that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. Today, we face an external environment in which trade and multilateralism are impaired and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demand on water, energy, and critical minerals. India continues to take confident steps towards Vikasit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. As I begin part A, I want to express gratitude to the people for standing firmly with us as we forge our way together towards becoming one of the largest economies of the world. Our aim is to transform aspiration into achievement and potential into performance as we ensure that the dividends of growth reach every farmer, the scheduled caste, the scheduled tribes, the nomads, the youth, the poor, and the in Vikasit Bharat Young Leaders Dialogue 2026, several innovative ideas were shared with our Prime Minister, which have inspired many of the proposals, making this a unique Yuva Shakti-driven budget. Our government is to focus on our poor, underprivileged, and the disadvantaged. To deliver on this sankalp, and given that this is the first budget prepared in Kartavya Bhavan, inspired by 3 Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second Kartavya is to fulfill aspirations of our people
and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third Kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, community, region and sector has access to resources, amenities and opportunities for meaningful participation. This threefold approach requires a supportive ecosystem. The first requirement is to sustain the momentum of structural reforms, continuous, adaptive and forward-looking. Second, a robust and resilient financial sector is central to mobilizing savings, allocating capital efficiently and managing risks. Third, cutting-edge technologies, including AI applications, can serve us as creating employment, boosting productivity, and accelerating growth. After the Prime Minister's announcement on Independence Day in 2025, over 350 reforms have been rolled out. Control orders, high-level committees have been formed, and in parallel, the central government is working with the state governments on deregulation and reducing compliance requirements. The Reform Express is well on its way and will maintain its momentum to help us fulfill our Kartavya. I now move to specific proposals. Under our first Kartavya, to accelerate and sustain economic growth, I propose interventions in 6 areas. 1. Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 2. Rejuvenating legacy industrial sectors. 3. Creating champion MSMEs. 4. Delivering a powerful push for infrastructure. 5. Ensuring long-term security and stability. And 6. Developing city economic regions. Scaling up of manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. Biopharma Shakti, meaning biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology and innovation. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. This will build the ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars. The strategy will include a biopharma focus network with 3 new national institutes of pharmaceutical education and research, popularly known as NIPERS, and upgrading 7 existing ones. It will also create a network of 1,000 accredited India clinical trials sites. We propose to strengthen the Central Drug Standard Control Organization to meet global standards and approve timeframes through approval timeframes through a dedicated scientific review cadre and specialists. India's semiconductor mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025 with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000
to capitalize on this momentum. A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, process and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduction import dependency and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods. Strong capital goods capability is a determinant of productivity and quality across different sectors. Towards building this capacity, I propose the following. High-tech tool rooms will be established by central public sector enterprises at 2 locations as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test and manufacture high-precision components at scale and at lower cost. 2. A scheme for enhancement of construction and infrastructure equipments will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high value and technologically advanced CIE. This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipments for building metros and high-altitude roads. I also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem with a budgetary allocation of 10,000 crores over a 5-year period. For the labor-intensive textile sector, I propose an integrated program with 5 subparts. 1. The National Fiber Scheme for Self-Regional Clusters with capital support for technology upgradation and common testing and certification centers. 3. The National Handloom and Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure support for weavers and artisans. Tex Eco Initiative to promote globally competitive and sustainable textiles and apparels. Summit 2.0 to modernize the fabric and upgrade the textile skilling ecosystem through collaboration with industry and academic institutions. Further, I propose to set up a mega textile. In challenge mode. They can also focus on bringing value addition to technical textiles. I propose to launch the Mahatma Gandhi Grand Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative and also our rural youth. India has the potential to emerge as a group for sports schools that will promote manufacturing, research and innovation in equipment design as well as material sciences. Rejuvenation of industrial clusters. I propose to introduce a scheme to revive 200 legacy industrial clusters to improve their cost competitiveness and efficiency through infrastructure and technology upgradation.
champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a three-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. To introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support micro enterprises and maintain available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a credit guarantee support mechanism through CGT-MSE for invoice discounting on trades platform from MSMEs, encouraging cheaper and quicker finance. 4. Introduce principles as asset security, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. Professional support. Government will facilitate professional institutions such as the ICAI, ICSI, ICMAI to design short-term modular courses and practical tools to develop a cadre of corporate mentors, especially in Tier 2 and Tier 3 towns. These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable cost. Infrastructure. During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure, including through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust and Real Estate Investment Trust, which have expanded to become centers. Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to 26. In this coming year, that is, strengthen the contact to lenders. Over the years, rights have emerged as a successful instrument for asset monetization. I propose to accelerate the setting up of dedicated rights. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I connect Ankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years. Starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich area. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up for incentivizing a modal shift from to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 20%. I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A seaplane VGF scheme will be also introduced to provide support for operations. Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2020, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and in end-use application
across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries, which need modern infrastructure and basic amenities. This project aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CE is proposed for implementing plans through challenge mode with a reform from research-based financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. Level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption. In order to achieve scale and improve efficiency in the public sector in BFCs, as a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management on debt instruments rules to create a more contemporary user framework for foreign investment consistent with India's evolving economic priorities. Corporate bond market. I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit. The current scheme under Amrit, which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. Will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the portfolio investment scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10% with an overall investment limit for all individual PROIs to 24%, the current 10%.
emerging technologies including AI. 21st century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers to support new technologies through AI mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund have come out of multi-dimensional poverty. For a decade of our government sustained and reform-oriented efforts. Our government has therefore decided to place a renewed emphasis on the service sector to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India with the following measures. I propose to set up enterprises standing committed by. This will make us a global leader in services with a 10% global share by exports. We will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways. For our youth, I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, technology, applied psychology, and health, and add 1 AHPs over the next 5 years. These are research-based facilities. They will have Ayush centers. These are research-based facilities. They will have Ayush centers, medical research centers, and infrastructure for diagnostics, post-care, and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs, professionals, including doctors and AHPs. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs